Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publisher. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे English for the grade 7 का यूनिट नंबर 8 and the title of unit is Appreciating the Value of Labor. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. Vocabulary and grammar. Now read the following words in the first column. Write the number of syllables each word has. Put a dash to indicate the syllables in the third column. अच्छा, syllable किसी भी word में जो vowel sound के हिसाब से उसका जो हम break down करते हैं वो होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं words को और उसके number of syllables. जैसे कि perfect 2 syllable है और ये बनेगा perfect. Obligation 4 syllable, obligation. Offering 3 syllable, offering. Bewilderment it's 4, bewilderment. Villagers 3, villagers. Farmer 2, farmer. Beautiful 4, beautiful. Elephant 3, elephant. Now अब हम बात करते हैं idioms की और प्रोवर्ब्स. इडियम जैसे कि जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक फ्रेज होता है जिसका फिगरेटिव मीनिंग होता है, जैसे इसको हम उर्दू में मुहावरा कहते हैं. अगर आपको इडियम का नहीं पता तो फिर आप फिगरेटिव का वो फ्रेज का आप उस लिखाई में उस राइटिंग में आप मतलब नहीं समझ पाओगे. जैसे कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. अब आप वैसे सुनने लिखोगे कि बिल्ली को थैले से बाहर आने दो, लेकिन अगर आपको कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब नहीं पता तो आप इसको नहीं समझ पाओगे. तो कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग होता है सीक्रेट का रिवील होना. अब प्रोवर्ब वो होता है जो कि एक ओल्ड सेइंग होती है और उसमें कोई पीस ऑफ एडवाइस होती है, यानी कि जिसको हम कहावत कहते हैं. एंड एप्पल्स अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. अब ये प्रोवर्ब है, यानी कि जिसका मतलब है कि अगर आप रोज एक सेब लेते हैं तो उसमें ग़िज़ाइयत का वो खजाना है कि जो कि आपको बीमार होने से बचाएगा. नाउ मैच द इडियम विद इट्स एक्चुअल मीनिंग. अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आई एम फीलिंग ब्लू. आई एम फीलिंग ब्लू का मतलब क्या होगा? आई एम सैड. आई एम इन अ पिकल. आई एम इन अ ट्रबल. डोंट गिव मी द कोल्ड शोल्डर, यानी कि डोंट इग्नोर मी. That's a piece of cake, यानी कि that is easy. Please give me a hand, यानी कि please help. My eyes are bigger than my stomach. I take more food than I can eat. They have buried the hatchet. इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा they have ended a quarrel. I eat a burger once in a blue moon. I eat a burger very rarely. Now proverbs. Match the proverbs with their meanings. No pain, no gain. Achievements required some sort of sacrifice. Action speaks louder than word. What a person actually does is more important than what he says. A stitch in time saves 9. It is better to deal with the problem at an early stage. Rome was not built in a day. It takes a long time to do a job properly. Bird of feather flock together. People of the same sort are usually found together. Now writing skills. Make words with able, ably, ibly. Unable, disable, respectable, capable, considerable, acceptable. Now able, invisible, responsible, possible, unfeasible, fungible, compatible. Ably, acceptably, dependably, tolerably, inevitability, delectably, metastably, terribly, possibly, horribly, credibly, responsibly, feasibly. Now write a short dialogue between a doctor and a patient in your exercise book, with the doctor insisting on a healthy diet to the patient to avoid problems in the future. Now अब आप इसको देखिएगा, आप अपना भी लिख सकते हैं. डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम अहमद, how are you feeling today? Walaikum assalam doctor, I'm feeling a bit tired and weak these days. I checked your report. There is nothing serious, but it looks like your diet is not healthy. What do you usually eat? Mostly fast food like burgers, fries and cold drinks. I don't like vegetables much. Ahmad, that's the problem. Junk food may taste good, but it is not good for your health. It makes you weak and lazy over time. But doctor, I don't have time in school and after school classes. It's easy to eat ready-made food.
I understand, but it is very important to eat a balanced diet. You should eat fruits, vegetables, whole grains, and drink plenty of water. This will give you energy and protect you from future problems like obesity, diabetes, and heart disease. Oh, I didn't know it could be that serious. Yes, Ahmed, you are young now, but what you eat today affects your health tomorrow. If you eat healthy, you will feel more attractive, do better in school, and grow stronger. Thank you, doctor. I will tell my mother to help me plan better meals. That's a great idea. And remember, no more skipping breakfast. Start your day with the healthy food. Sure, doctor. I will take care of my health from now on. Good. Stay healthy and happy. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।